वेलकम बैक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब सदर हान जैंग की बीजिंग में मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा चीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब सदर हान जैंग की बीजिंग में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का सरकारी दौरा किया है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें भी की हैं। इन मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़्म का अयादा किया गया है और फील्ड मार्शल ने चीनी नायब सदर और वज़ीर खारिजा से भी मुलाकात की है। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि सीपैक में ताउन और जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के हवाले से भी बातचीत की गई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का दौरा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से चीनी नायब सदर हान जैंग की बीजिंग में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम दौरा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने चीन का सरकारी दौरा किया है और खुद मुख्तारी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के बारे में बातचीत हुई है। इस दौरे में चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इक़दामात में पाक फौज के किरदार की अहमियत को भी सराहा है, जबकि फील्ड मार्शल ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन से भी मुलाकात की है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस दौरे में चीनी नायब सदर हान जैंग से मुलाकात की है बीजिंग में और इस मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के अज़्म का अयादा किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने चीनी नायब सदर और वज़ीर खारिजा से भी मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सीपैक में ताउन और जोग्राफियाई और सियासी चैलेंजेस के हवाले से बातचीत की गई। मुलाकातों में बाहमी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया गया। खुद मुख्तारी, मुख्तलिफ शोबों में ताउन और इलाकाई इस्तेहकाम के बारे में भी बातचीत हुई। चीनी क़यादत ने जनूबी एशिया में अमन इक़दामात में पाक फौज के किरदार की अहमियत को सराहा। फील्ड मार्शल ने चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के नायब चेयरमैन से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने चीन की PLA की सियासी अमूर के सरबरा और चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात की। PLA आर्मी हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान ने डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील की है। सोशल मीडिया कंपनीज को दहशतगर्दी का मवाद हटाने का मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनीज को दफातर खोलने की दावत दी है। तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है, दहशतगर्दों के खिलाफ दीवार बना रहा है। दहशतगर्दी के सोशल मीडिया पर सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगा लिया है। दहशतगर्द तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडे के लिए नौजवानों को भर्ती कर रही हैं, आज़ादी इजहार को खामोश नहीं कर रहे हैं। बैरिस्टर अकील का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा ने ISKP और TTP पर पाबंदी लगाई हुई है। दहशतगर्द ग्रुप न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में भी शामिल हैं। अमरीका और बरतानिया ने BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया है, जबकि दहशतगर्द प्रोपेगेंडा पीका के तहत काबिल तहत जुर्म अमल करार दिया गया है। बराह रास्त लिए चलेंगे आपको। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Equally important were my visits to the remote parts of our beautiful country. Gawadar in Balochistan, Ghotki in Sindh, Sadiqabad in Punjab, Dera Ismail Khan in Banu in Khyber Pakhtunkhwa. There I engaged with the members of the district judiciary and the bar, and I must acknowledge the valuable contribution made in this regard by my brother judge, Justice Shahid Waheed. His contribution in advising me in formulating the agenda cannot be ignored. Their insights, the insights of, they helped me to identify the core issues, many of which were later included in the agenda of the National Judicial Policy Making Committee, which was finally convened on this 11th of July 2025. Now, it is my clear and firm belief that collective wisdom must always prevail over individual wishes. And without taking ownership of all the stakeholders, reforms are never lasting or effective.
Guided by these principles, we, after thorough deliberation, reached unanimous agreement on 11 issues. I will only discuss a few which are relevant for the symposium that we are having today. First was, let's take the first, which was commercial litigation corridor. It was decided that what is going to happen is issues relating to corporate matters should be dealt with by one court, and same was the case with the appellate forum. It should have one forum and a bench of the High Court which should be assigned to deal with these cases, and same is the case with the Supreme Court. This will bring in consistency in the decisions, and hopefully it will also shorten the period of deciding such cases. We also discussed double docket regime, where we discussed whether there should be 2 shifts in courts. This matter was left to the high courts, and inshallah we are meeting again on the 18th of August, where each high court will give us an input of how they want to proceed with it. Same is the case with establishment of model criminal trial courts. Well, in this case, we said what we're going to do is all the oldest pending criminal trials before the sessions will be taken up by these model courts, and they will be decided on a day-to-day basis. One very important is the institutionalization of court-annexed mediation. Let me tell you, mashallah, we've got 20 trained judicial officers already in our judiciary, and we have to take maximum use and utilize their expertise. And it was decided that to start off with, one district in every high court will take up this particular mandate, and we will assess how the progress has been made and decide about it after 3 months. And we will increase this particular aspect of it, but only once we see how the progress of the initial steps that have been taken. Then comes timelines for disposal of different category of cases. 13 different items were taken up: declaratory suits, declaratory inheritance, injunctions, rent cases, family suits, succession cases, execution petitions, labor cases. There were the 13 on which we decided. This can be increased later, but to start off with, we started with 13, and the high courts have been asked to give us the timeline that they think is appropriate. We will inshallah decide it on the 18th. Then comes the Professional Excellence Index. This is something which we've introduced to facilitate talent hunt of lawyers for induction into the district judiciary and elevation to the high court judicial positions. Then comes this particular, the district judiciary will gauge the lawyers who come and argue cases before you. And then you will pass it on to the registrar, and the data will be collected over there. And when the time comes for induction into the district judiciary or the high courts, this particular data will help us in engaging. There are certain lawyers who are practicing law in furthest districts, and they don't come to the high courts, and so they don't come within the view of the high courts and the bar. So this is a step which we have taken, which will bring in the young lawyers also. They will be given an opportunity, and those who are let's put it this way, who are apolitical and have no political affiliation, and they are genuinely professional lawyers. So this will bring up, will give an opportunity for them to be also considered. Then is ethical guidelines for use of AI in the judiciary. Undoubtedly, given the rise of AI and the benefits associated with its use, integrating it into the justice delivery system is our top priority. No doubt about that. However, the adoption of AI must not be blind or uncritical, as it raises complex ethical and legal concerns that demand careful consideration. To this end, the National Judicial Automation Committee, a committee comprising of justices of the high courts and headed by my illustrious brother, Justice Muhammad Ali Mazhar, have been requested to prepare and recommend an ethical framework for the use of AI in the judiciary. We hope that this initiative, along with the willingness of our judiciary to use AI, will enable us to integrate AI
into our processes safely and allow us to make our justice delivery system more efficient, transparent, and above all, citizen-centric. Now, let's come to some important reforms relating specifically to the well-being of the district judicial. I'll start with the institutional response to external influence on judges of the district judicial. Mind you, as far as the